Good morning, students, and I hope you all are doing great at your places. And today we'll be studying a very interesting chapter, that is The Happy Prince. So let's just begin with this chapter, The Happy Prince. The title of our chapter is The Happy Prince, and let's just read this play. This is actually a play जहाँ पे हम different kinds of friendship पढ़ेंगे between a small bird and of course a statue of rich prince और एक bird के बीच में क्या है? It's a different kind of friendship. So let's just see, what are the characters over here is the narrator. Who is the narrator? The one who narrates the story. The swallow, the happy prince, the sick child's mother, the writer, and of course the match girl. Right? This narrator. High above the city, on a tall column, stood the statue of a happy prince. एक सिटी में बहुत ही लंबी चौड़ी स्टैचू बनी हुई किसकी प्रिंस की एंड ही वाज ग्लाइडेड ओवर जो स्टैचू है इट वाज ग्लाइडेड ओवर विद द थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड वहां पे लीव्स बनी हुई है फाइन गोल्ड राइट फॉर आईज ही हैज टू ब्राइट सफायर्स उसकी जो आईज हैं उसके लिए क्या है दे हैव टू ब्राइट सफायर्स सफायर इज अ काइंड ऑफ अ स्टोन व्हिच इज हेल्पफुल in basically in increasing or you can say it gives the advantages for increasing the benefits of Mercury planet on your signs. That is, it is used in astrology. जिसको हम पुखराज बोलते हैं. It is found in different colors. Yellow, right? Yellow sapphire होता है, blue sapphire होता है, green sapphire होता है, right? And a large red ruby glowed on his sword. स्वॉर्ड के ऊपर क्या है रूबी का स्टोन लगा हुआ है these stones are very expensive especially Raj is one of the most prestigious stone you might have saw that celebrities they used to wear this stone on their index finger of the right hand side right now swallow settling at the prince's feet to what a luck I have a golden bedroom tonight मेरे पास कैसा है सोने का क्या है बेडरूम है right now swallow just walk after a drop falls on him पर कोई drop fall होती है not a cloud in the sky yes it's raining how strange I think this swallow is a bird right के ऊपर बारिश पड़ रही है swallow just wake up again annoyed she was totally irritated what is the use of statue if it cannot keep the rain off from the poor folks कि हमको रेन से नहीं बचा सकता तो इसका क्या यूज है he looks up and is shook to see the statue is crying उसको ऐसा लग रहा है statue is crying happy prince I am happy prince मैं बिल्कुल खुश हूँ swallow why are you crying then you have made me completely wet मेरे को पूरा गीला बना दिया है हैप्पी प्रिंस व्हेन आई वाज अलाइव जब मैं अलाइव था तो ह्यूमन हार्ट था मेरे अंदर आई डोंट नो वो टीयर्स कहाँ से आए हैं व्हाट टीयर्स वर आई लिव्ड इन अ पैलेस एंड सोरो नॉट अलाउड टू एंटर इनसाइड मैं पैलेस में रहता हूँ आई लिव्ड इन अ पैलेस और आई आई एम नॉट अलाउड टू एंटर इनसाइड मुझको अंदर आने नहीं दिया जाता है नाउ आई एम डेड मर चुका हूँ आई हैव लेड हार्ट एंड दे हैव सेट मी हियर सो हाई देखिए अब मेरा दिल जा चुका है और अब मुझे एक स्टैचू के तरीके पे बाहर उन्होंने ऐसा स्टैचू बना दिया है दैट आई कैन सी ऑल द सैडनेस इन द सिटी सारी सैडनेस देख सकता हूँ सो आई एम वीपिंग इट इज ऑल जस्ट इमेजिनरी बिकॉज इट्स अ फिक्टिशियस स्टोरी राइट फॉलो खुद से बोल रही है लेड हार्ट सो यू आर नॉट कम्प्लीटली मेड अप ऑफ गोल्ड इसलिए तुम शायद सोने के नहीं बने हो हैप्पी प्रिंस फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट इस सड़क पे बना हुआ है दिस देयर इज अ पुअर हाउस ही इज टेलिंग की बहुत दूर की साइड एक बहुत ही करीब सा घर है वहां उस हाउस में एक पुअर वुमन रहती है जिसका सन बेटा जो है बहुत ही ज्यादा बीमार है ही हैज फीवर एंड इज आस्किंग फॉर द ऑरेंजेस के लिए पूछ but his mother does not have enough money so that she can buy the oranges for her son. Swallow, little swallow, please you just you give her the ruby out of my sword hilt जो मेरा sword है मेरी जो तलवार है उसकी जो edge है जैसे ये हम sword बनी हुई है और काइंड ऑफ एज बनी हुई है यहाँ पे क्या लगा हुआ है रूबी इस रूबी को उठा के उस गरीब इंसान को दे दीजिए राइट फॉलो आई कांट माय फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट मेरे फ्रेंड्स वहां वेट कर रहे हैं आई हैव टू फ्लाई इन बिफोर इट्स टू कोल्ड सर्दी पड़ने से पहले मुझे फ्लाई करके इजिप्ट जाना है राइट इजिप्ट की कैपिटल क्या होती है कैरियो राइट हैप्पी प्रिंस swallow लिटिल swallow will you not stay with me for a night आज रात के लिए प्लीज स्टे करो एंड बी माय मैसेंजर प्लीज मेरे मैसेंजर बनो मैसेंजर वन हु sends the messages from one end to the another
द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर इज सो सैड। बॉय बहुत ही ज्यादा थर्स्टी है और उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा उदास है। फॉलो, आई डोंट लाइक बॉयज, आई डोंट आई लाइक बॉयज, मतलब आई डोंट आई लाइक बॉयज, मतलब ये है कि मैं जाना तो नहीं चाहती हूँ। आई लाइक बॉयज लास्ट समर व्हेन आई वाज स्टेइंग ऑन अ रिवर, शी स्टेइंग, जब मैं रिवर पे रह रहा था। दो रूड बॉयज थे और वो कैसे थे, मिलर के सन थे, वर ऑलवेज थ्रोइंग स्टोन्स एट मी, हमेशा मुझ पे पत्थर फेंकते थे। दे नेवर हिट मी, ऑफ कोर्स वो कभी मेरे को हिट नहीं हुए, बट वी सोलो फ्लाई, हम लोग बहुत दूर तक फ्लाई करने लगे। और वेल दैट इट वाज मेंट टू देम टू, वो पत्थर फेंकते थे, हम लोग वहां से चले गए। हैप्पी प्रिंस, प्लीज फॉलो, इट्स वेरी कोल्ड हियर, बहुत ठंड है, बट आई विल स्टे विद यू फॉर अ नाइट एंड मैं आपका मैसेंजर बन जाऊंगी। हैप्पी प्रिंस, थैंक यू लिटिल swallow, द swallow she lies down and the light comes alive on a right stage, लाइट भी आ चुकी है। swallow she is fluttering his wings, अपने wings को फ्लटर कर रही है, उड़ रही है, एंड above a sick child and lying on the ground for flying away, जाने से पहले वो वहां पहुंच गई। नरेटर, the swallow he just picked out the great root from the prince sword and flew away with its feet over the roofs of the town, पे वो उड़ चुकी है वो रूबी लेके। he placed next to this ailing child, बेड के पास रख दिया, and even fanned him with wings, उसको हवा भी करी। sick child, oh I feel so good, cool, I must be getting better, कि शायद मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ। the lights on the stage they came back, वापस आ गए, and we the swallow foot of the prince, कि भाई क्या है, उन्हीं रास्तों से वापस आ रही है। swallow, tonight I'll go to Egypt, मैं आज कहाँ जा रहा हूँ, इजिप्ट जा रहा हूँ। happy prince, swallow little you not stay with me one night longer, क्या एक रात और नहीं रह सकते हो। फॉलो, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, बहुत वेट कर रहे हैं। टुमारो माय फ्रेंड्स फ्लाई फर्दर, और दूर चले जाएंगे, साउथ टू द जंगल्स ऑफ अफ्रीका, एंड दे आर ऑफ कोर्स वेटिंग फॉर मी, कि मैं भी उनको ज्वाइन करूं। द बर्ड, this is the sick child and this is her mom, right? Now happy prince, swallow, little swallow, please, far across the city I see a young man leaning over a desk covered with paper, वहां पे मैंने एक इंसान को देखा है जो डेस्क के ऊपर लेटा हुआ है, खुद को कागज से लपेटे हुए। ही इज ट्राइंग टू फिनिश द प्ले फॉर द थिएटर एंड इट्स टू कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड है, एंड टू राइट एनी मोर, लिखने के लिए, एंड देयर इज नो फायर इन दिस रूम, हिज हंगर हैड मेड हिम फेंट। ये हंगर मतलब वो इतना ज्यादा जो उसको भूख लग रही है, जिस वजह से वो क्या हो गया है, बेहोश हो गया है। राइट, फॉलो, आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं तुम्हारे लिए एक और दिन वेट करूंगा, बिकॉज यू रियली हैव अ गुड हार्ट, तुम्हारा बहुत अच्छा दिल है। शैल आई टेक हिम अनदर रूबी, मैं एक और रूबी लेके जा सकता हूँ। हैप्पी प्रिंस, अलाज आई हैव नो रूबी नाउ, मेरे पास अब कुछ नहीं है। ओनली आई हैव लेफ्ट इज विद माई आईज, और मेरी आईज में क्या लगा हुआ है, सफायर लगी हुई। They are made up of rare sapphires. Sapphires, I told you, precious stone. Just pluck one of them and take it to them. और एक वहां से उठाओ और उसको ले जाओ। Sweeping swallow, she is sweeping. I cannot do that. मैं कर सकती, Happy Prince, swallow. Please do as I command you. command कर रहा Now the swallow flies away and of course light dim हो चुकी है. Lights have come alive. On the right stage हम लोग देख क्या क्या देख पा रहे हैं, the poor cold, जिनको ठंड लग रही है, hungry writer, he is working on his play, वो अपने प्ले पे काम कर रहे हैं। now the narrator, so the swallow he just pluck out the prince eye, अब उसने प्रिंस की आई भी ले ली है, and she just go away to the student room. It was an easy thought to get in as there was a hole in the roof, हो रहा है, होल हो रहा है। थ्रू दैट थ्रू दिस ही डार्टेड, मतलब रूफ के अंदर होल हो रहा है, वो वहीं से गई है। came into the room, the young man had his head buried in his hands, का जो हाथ है सर पे है, he did not so he did not hear the flutter of the birds wing, अपने birds के wings की आवाज नहीं सुन पा रही है। when he looked up he found that star is lying on his withered violet, withered means मुरझा जाना, very very important word। विधवा का मतलब होता है मुरझा जाना, एंड दिस वर्ड इज बेसिकली यूज्ड फ्लावर्स, राइट। with a writer, now he is looking happy, someone likes my plays and give me this, now I have finished it, मैं अपना प्ले फिनिश कर लूंगा। लाइट्स जो है वो डिम हो गई एंड दे केम अलाइव ऑन द सेंटर स्टेज अगेन, वर्ड टू प्रिंस की आ चुकी। नाउ swallow, I am finally going to Egypt and I am saying a seeking a goodbye to you,
हैप्पी प्रिंस, swallow, will you not stay with me one night longer? क्या एक रात और नहीं रुक सकते? Swallow, it's winter and the snow will be here. अब यहाँ पे स्नो आ जाएगी, सन जो है बहुत ही ज्यादा वार्म होगा. ग्रीन palm trees, dear prince, I must जाना चाहिए, but I will never forget you. Next spring I will definitely come back with the two beautiful jewels in the palace. Those you have given them away, जो तुमने दे दिए हैं, मैं उसके बिहाफ पे तुमको दो और ला कर दूंगी. राइट. प्रिंस, आई एम स्क्वायर बिलो, देर इज अ लिटिल मैच गर्ल. एक मैच गर्ल है. शी लेफ्ट हर मैचेस फॉल इन द गटर एंड दे वर ऑल स्पॉइल्ड. कि उसने अपने जो मैच हैं वो गटर में गिर गए हैं. एंड हर फादर विल बीट हर, उसके पापा उसको बहुत मारेंगे. डज नॉट ब्रिंग मनी. एंड शी इज क्राइंग, और वो रो रही है. राइट. स्वॉलो, आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर बट आई कैन नॉट प्लक आउट अ सेकेंड आई. यू क्वाइट वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देम, तुम अंधे हो जाओगे. अभी तो हो थोड़े से, और पूरे हो जाओगे, और अब मैं तुम्हारी एक और आंख नहीं. नाउ प्रिंस, स्वॉलो, प्लीज डू एज आई कमांड यू, जैसे मैं कमांड कर रहा हूँ. वापस से लाइट डिम हो चुकी है. वापस से वो राइट स्टेज पे आ चुका है. एक मैच गर्ल देख रहे हैं, फ्लाइंग ओवर द. फॉलो जो है ये ऊपर फ्लाई करके आ रहा है. नरेटर, सो ही प्लग द प्रिंस अदर आई. दूसरी आई भी इसने प्लग कर ली. एंड डार्टेड विद दिस ही पास द मैच गर्ल के पास गया. एंड ही स्लिप द ज्वेल इनटू हर palm ऑफ हर हैंड, उसके हाथ में दे दिया. नाउ दिस मैच गर्ल, व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास. किधर है ये? द लाइट अगेन डिम्स डाउन, वापस से सेंटर स्टेज पे आ गई हैं. See the bird at the prince feet again, once again. प्रिंस के फीट पे वो बर्ड swallow वापस आ गई. नाउ swallow, you are blind now, so I will stay with you always. अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी. प्रिंस, नो लिटिल go way to Egypt, अब आपको इजिप्ट जाना चाहिए. swallow, I will stay with you always, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी. एंड नरेटर ऑल द नेक्स्ट. swallow जो है वो हमेशा प्रिंसेस के शोल्डर पे बैठ जाती है. एंड टोल्ड हिम द स्टोरीज व्हाट ही हैड सीन. एंड में वो देख पा. It has been written by Oscar Wilde, right? It's a beautiful story. Moving on to this word meaning, guided, gilded means covered with a thin layer of gold and a substance that looks like a gold. मतलब पूरा सोने से भरा. Sapphires is a precious stone, usually bright blue in color. I already told you, bright blue, bright yellow, bright green. Murmuring means speaking something very quietly. बोलना. And these sapphires, they are always wear on the index finger of the right hand. This is a yellow sapphire. Okay. Now fluttering means making a series of quick movements. बहुत ही जल्दी जल्दी फ्लटर करना, इधर उधर फुदकना. Started मतलब moved quickly. Wither means मुरझा जाना. Dried. Sobbing is crying. Swooped का मतलब होता है किसी भी चीज में जल्दी जल्दी quickly move करना. The air, especially down from a high position. Right. Moving on to this multiple choice question. The swallow had to go to Egypt. Right. The prince ka heart, it was made up of kya? It was made up of gold, and the princess had two bright yellow sapphires for his eyes. The match girl had fallen into the gutter. To match है वो girl के जो gutter में. What is the meaning of the word wither means? Moving on to this fill in the blanks, I have dashed tonight that I have a golden bedroom. Right, they are made up of rare sapphires के बने हुए हैं वो. So let her matches fall in the ash, and they all are. Let her matches fall in the gutter, and they all are spoiled. वो सारे खराब हो गए हैं जिसकी वजह से उनके डैड को डांट रहे हैं. Right, thinking that he darted and came into the room. Right, and there is no dash in the room. उसके रूम में क्या नहीं था? There was no fire, and उनकी जो hunger थी had made him faint. Right. Just do one correction. यहाँ पे thinking की जगह through आएगा. Right. Moving on to this true and false. So the people in the town, they were very rich. क्या बहुत ज़्यादा rich थे? This is absolutely false. Right. The swallow is loyal to the happy prince. This is, the swallow does not help the match girl. This is absolutely false. Of course, does help this match girl. Happy prince statue, it is in Egypt. This is false. Right. And the happy prince believe in helping all others. Yes, this is true. Right.
Moving on to this question answers, please complete all these question answers. And this chapter was very sociable, was very humble. This is how that this king, being a statue, he made himself useful to the others. You people also, please help others as much as you can and keep doing hard work for your goal and stay blessed.